Namaste and very good morning to all of you. I would like to thank Global Spoken English for giving me a chance to enhance my communication skill. My name is Dinesh and I am learning English speaking from Global Spoken English. Let me start my speech some beautiful lines. Do work so hard to study in the present that you don't have to spread your hands in front of anyone in the future. वर्तमान में पढ़ाई के लिए इतना मेहनत कर लो कि भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities, they vary in their desire to reach their potentials. सफल और असफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं. Education has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth it. शिक्षा ने एक ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ तो सकती है पर ये नहीं पहचान सकती क्या पढ़ने लायक है. Education is the most for both the men and women equally as brought together make a healthy and educated society. It is essential to for getting a bright future as well as plays a most important role in the development and progress of the country. Citizens of the country become responsible for the better future and development of the country. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह होती है जो एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाती है. I conclude my speech. Thank you all for listening to me patiently. Thank you so much. Have a nice day. सलाम. बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है. तो बहन भाइयों, देर किस बात की,